था। और कल हमने बात किया था कि सबनेटिंग हम क्यों कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली सबनेटिंग, we're dividing the network so that we can utilize the addresses in more efficient way, right? Reduces wastage. If you do not divide the network, so wastage ज़्यादा होगा. Do not divide mean in that case you will be using the network as it is, classful, undivided. Sure. Now, next thing what we have to understand is how to do this subnetting. How to do subnetting, right? Now, one thing is very obvious, जो आपने नोट किया होगा, क्या है वो, कि जब ये आपका एक क्लासफुल नेटवर्क है, and when you are going to divide this network into multiple subnets, so in one sense we can say that we are getting more number of networks, isn't it? हाँ, Yes, sir. नेटवर्क छोटे हैं, लेकिन एक नजरिए में अगर बोला जाए, so in subnetting we are increasing the number of networks. Subnetting is increasing the number of networks, जिन्हें हम बोलते हैं सबनेट्स. ओके, और शुरू से हमने ये दो ही बातों पर फोकस किया है. एक है नंबर ऑफ नेटवर्क्स और दूसरा है नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क. तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ नेटवर्क तो बढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट? कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? नंबर ऑफ होस्ट. भाई छोटे नेटवर्क है ना, छोटे नेटवर्क का मतलब है कि एड्रेसेस कम हो रहे हैं, isn't it? We are Yes, sir. reducing. Yes. Subnetting is reducing the number of hosts per network or per subnet, right? This is subnetting. और हमें ये भी मालूम है कि whether you talk about number of networks or number of hosts per network, everything is based on number of bits, right? Everything is based on bits availability, right? Example जो अभी तक हमने किया है, समझा है क्या है? If you have more network bits, आपके IP address में दो तरह के bits हैं, right? Network bits हैं, host bits हैं. Total bits are 32. ये number internally fixed नहीं है. Now the thing is, and out of 32, more the number of network bits you have, more networks you will get. Last time में networks बहुत कम, क्योंकि network bits बहुत कम है, right? Everything is based on bits. लेकिन Yes. number of hosts बहुत ज़्यादा है, right? Number of hosts in class A are more than crores, more than 1.67 crores, because host bits are more. So more the number of network bits, more networks you will get, more host bits if you have more number of hosts, or more number of addresses per network you will get. Yes. तो जब हम यहाँ बोलते हैं कि हम सबनेटिंग में नेटवर्क्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, it obviously means you have to have more number of network bits. यानी conclusion is, in subnetting we are actually increasing the number of network bits. और क्योंकि नंबर ऑफ होस्ट हमारे कम हो रहे हैं, मतलब we are reducing the number of host bits. Yes, this is subnetting. अगर हमें सबनेटिंग करना है तो नेटवर्क बिट्स की संख्या बढ़ाना है. क्यों? Then only we can have more number of networks. लेकिन ऐसा करने से हमारे होस्ट बिट्स कम हो रहे हैं, and so number of host पर नेटवर्क वो भी कम हो रहे हैं. इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, और हम अपने केस में
क्लास सी का एक नेटवर्क लेकर बात करेंगे. क्लास सी. Now class C network, the format is network host. ये आपका एक क्लास सी का नेटवर्क है, suppose, right? It is a small network. Now, according to the class rules, in a class C network, we have got 24 network bits and 8 host bits, right? This 24 and 8, this is according to class rules. Fix नहीं है. और अब इस क्लासफुल नेटवर्क को अगर हमें सबनेट करना है, डिवाइड करना है, तो क्या करना होगा? जैसे हमने कंक्लूजन अभी ड्रॉ किया है, we have to increase the network bits. तो चलिए नेटवर्क बिट्स बढ़ा देते हैं. 24 नेटवर्क बिट है. सपोज I increase the bit by 1, right? मेरे बिट्स हो गए 24 plus 1. सपोज मैंने एक बिट बढ़ा दिया, तो सवाल ये है कि एक बिट आएगा कहाँ से, right? We're not going to change the size of IP address. The size of IP address is 32. And even after increasing the bit like that, it remains same, 32, right? So the only choice left for this additional one is what? When we do plus 1 here in the network part, it's going to be -1 here in the host part, like this, keeping the size same, 32 bits. Yes, this is subnetting. यानी subnetting में हम क्या कर रहे हैं? Of course, we are going to increase these network bits, but those increased number of bits, in fact, we are all going to borrow from the host part and include it here into the network part. So when I say +1 here in the network part, at the same time it's going to be -1 here in the host part, keeping the size same, 32. This is subnetting. यानी सबनेटिंग में हम नेटवर्क बिट्स की संख्या बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स दरअसल हम होस्ट पार्ट से बोरो कर रहे हैं. यस, दिस इज कंक्लूजन, राइट? लेकिन अब बात ये है कि करना कैसे है ये सब कुछ. सी सिस्टम प्रोसेस करना है SNES24. तो दरअसल सिस्टम को कैसे समझेगा? हमारी समझ में तो बात आ गई, and how system will understand कि bit का arrangement change हो गया है, right? In this case, bits which were earlier 24, now they have become 24 plus 1. Those bits which were 8 earlier, they are no longer 8. It has changed to 8 minus 1. ये बात सिस्टम को कैसे समझ में आएगी? You have to convey this change to the system, which is going to process this address value. Yes. सिस्टम को ये भी कैसे पता चल रहा था कि 24 और 8 है? Right? कैसे पता चल रहा था? Because system was assuming default subnet mask. क्या है default mask? Class C. 255.255.255.0. Right. So 3 times 255, meaning in binary we have got 24 ones, right? 8 plus 8 plus 8. तो ये 24 1 है. Binary means mask को अगर मैं binary में लिखता हूँ, so these are 24 ones. This 0 in binary means 8 zeros. ऐसा ही है. So these 24 ones in the mask tell to the system that in the address we have got 24 network bits. And these 8 zeros in the mask tells to the system that there are 8 host bits in the given address. यहाँ से पता चलता है, right? लेकिन अब हमें सिस्टम को बताना है कि बिट्स आर नॉट 24. They have changed to 24 plus 1. And just to convey this change to the system, हमें क्या करना होगा? We really need to have these many number of ones in the mask. और बड़ी सीधी है. अगर मुझे सिस्टम को बताना है कि एड्रेस वैल्यू में 25 वन है, तो मुझे रियली चाहिए 25 वन here in the mask. So 24 are already there. We need one more one, isn't it? And that additional one we are going to borrow from the host part, meaning one of the 0 we are going to pick up and make it 1 like this. Now this is 24 plus 1 ones.
लेकिन ऐसा करने से हमारे जीरोस कम हो गए. Zeros are 8 minus 1. Yes, this is a change in the mask. What do you have to do? यानी सबनेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है? You have to change the subnet mask. This is my changed subnet mask. This is not the default. और mask में कुछ इस तरीके से change करना है that we are going to increase the number of ones, and those increased ones, in fact, we are going to all have it from the host part, meaning we are going to convert the zeros into ones. So इस केस में केवल ये बताने के लिए एग्जाम्पल है that if I have to convey to the system that there are 25 network bits, we are going to have 25 ones in the mask. And if you're going to change it like this, it means we're doing subnetting, right? Subnetting में यही है ना कि हमने network bits बढ़ा दिए. तो अगर आपने network bits बढ़ा दिए मतलब एक बात तो साफ है. You are doing subnetting. You are dividing the network. Remember, as long as you are using the default subnet mask, meaning no subnetting, your network is a classful network. It's undivided network, right? Meaning this network is all according to the class rules, undivided. But the moment you are going to change your mask in such a way that number of ones are increased, of course, by borrowing them all from the host file. So changing the mask in this way, meaning you are doing subnetting, you are dividing the network. So right now, this mask, now this is all in binary. If I convert this back into decimal, so this mask, how it all looks like? It is 255, 255, 255. That remains as it is. These are 24 ones. लेकिन एक बिट हमने बोरो किया है and with this borrow क्या हुआ है? Your octet becomes like this. 1 0 0 0 0. How much? Conversion 128. Yes, this is the changed mask. This is not the default. और ऐसा mask अगर हम यूज करते हैं क्लास A एड्रेस वैल्यू के साथ, meaning you are doing subnetting. So right now this mask, if I use with this class A address, meaning we are performing subnetting by 1 bit. You're dividing the network by 1 bit. Yes, is this clear? So remember, I'm telling you the contrast. जब तक आप किसी भी एड्रेस वैल्यू के साथ डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हो, मतलब कोई सबनेटिंग नहीं हो रहा है. Your network is a classful network, undivided. लेकिन अगर आपने मास्क में चेंज किया कुछ इस तरीके से that number of ones are increased, of course, increase करने का एक ही तरीका है, borrow it from the host part. So you're doing subnetting. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें एक बिट मैंने आपको बोरो करके बताया है, एंड विद दिस बोरो that's how your mask looks like. And right now the meaning of this mask is what? That you are dividing the class C network by 1 bit. Now your IP address, अगर ये मास्क अपन किसी क्लास C एड्रेस वैल्यू के साथ यूज करते हैं तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि IP एड्रेस में 2 तरह के बिट होते हैं, नेटवर्क बिट, होस्ट बिट्स, राइट. लेकिन जब हम सबनेटिंग करते हैं, so your IP address which is having total 32 bits, you will have 3 types of bits now. If you are doing subnetting, then your IP address will have 3 types of bits. First is same, network bits, meaning whatever default ones you have in the mask, they represent network bits, right? Same. Then second type of bits are again same. They are known as host bits, meaning whatever zeros you have in the mask, they represent host bit all the way. But when you do subnetting, new type of bits are getting created, जिन्हें हम बोलते हैं सबनेट बिट्स. यानी सबनेट बिट्स क्या है?
सबनेट बिट्स दरअसल वो बिट्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट दे आर पार्ट ऑफ द होस्ट, लेकिन हमने क्या किया, deliberately we have picked them up and include here into the network part. तो कहने का मतलब जितने बिट्स होस्ट पार्ट से उठाकर नेटवर्क पार्ट में शामिल कर दिए वो हैं सब नेटवर्क। क्लियर? Yes, sir. तो राइट नाउ ये मास्क जो अपन यूज कर रहे हैं विद क्लास एड्रेस, तो सिस्टम को क्या समझ में आएगा, ये मास्क देखें, ये गिवन एड्रेस वैल्यू में 24 नेटवर्क बिट है, दैट इज समथिंग डिफॉल्ट। एक बिट बोरो किया है, 128 का मतलब एक बिट हमने बोरो किया है, दैट रिप्रेजेंट्स सबनेट बिट, एंड रिमेनिंग जीरोस लेफ्ट आर 8 minus 1, 7, रिप्रेजेंटिंग होस्ट बिट्स। यस, ये सिस्टम को समझेगा। ये मास्क अगर हम यूज करते हैं क्लास ए एड्रेस बिट के साथ, तो सिस्टम को समझेगा कि गिवन आईपी एड्रेस में 24 नेटवर्क बिट हैं, क्योंकि क्लास सी का है, दैट इज डिफॉल्ट, एक सबनेट बिट है और 7 होस्ट बिट है। और जैसा सिस्टम प्रोसेस करता है समझता है वैसा हमें समझना है, राइट? यस। हमको भी उसी तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि ये रूल्स हमने फॉलो करना है ना। यस, बोलिए, इज दिस क्लियर? यहाँ पर सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया है कि एक बिट अगर हम बोरो करते हैं तो मास्क कैसा नजर आता है और उसका क्या मतलब है, राइट? सिस्टम को क्या समझ में आता है। यस, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी तो मैंने एक ही बिट लिया है, एक ही जीरो को पिकअप किया है, but you have so many number of zeros, so many number of host bits, but you can pick up, आप वो भी पिकअप कर सकते हो, लेकिन पिकअप करने का भी एक कायदा है, एक रूल है, राइट? क्या है वो रूल? सेज दैट whenever you are going to make bits on, whenever you're going to pick up the bits in the mask in the host part, always do it moving left to right only, one by one sequentially. Yani after this one you can pick up this zero and make it one, after this you can pick up this zero and make it one, sequentially left to right. एंड while doing so don't skip any bit. ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया, इसको वन कर दिया, इसको लीव कर दिया, इसको छोड़, इसको वन कर दिया, दिस रॉन्ग। डोंट गो अदर वे अराउंड, ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट करने लगे, नो। The rule says that whenever you're going to make bits on in the mask, do it moving left to right only, one by one sequentially, and while doing so don't skip any bit, किसी भी bit को लीव नहीं करना है, बीच में कोई जीरो नहीं होना चाहिए। वन जब होंगे तो कंटिन्यूस, इट्स गोइंग टू बी a string of ones one after the other sequentially. This is rule. And when you're going to follow this rule, so obviously it will give you different mask values, right? तो सबनेटिंग में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जरा ये समझ लेंगे कि क्लास सी में, क्लास सी से शुरुआत करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल मास्क वैल्यूज। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं तो क्लास सी में पॉसिबल मास्क वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, राइट? So my next task is, let's talk possible subnet mask, right? In class C, you know that the default subnet mask for class C, it is 255, 255, 2550. And if I write this zero in the last octet in binary, so there are 8 zeros. Yes. So to prepare the list of possible masks, we are going to follow this rule, meaning one by one we are going to make bits on moving left to right. तो जैसा भी मैं आपको एग्जांपल में बता ही रहा था, if I pick up one bit, now this bit if I pick up, this bit is having a weight of 128. So your mask value becomes 255, 255, 255, 128. Right, the meaning of this mask.
in terms of bits: network, subnet, and host bits. So this mask, जैसा अभी मैंने बताया, tells to the system कि given address में 24 network bits and default. एक bit आपने borrow किया, that is subnet bit. Remaining zeros are 7 host bits. And this mask can also be written like this: /25. This is another way of representing your mask value. /25 का मतलब है that there are 25 ones in the mask out of 32 left to right. Rest are all zeros. कैसे? 8 ones, 8 ones, 8 ones. 24 the default, and one more one that we borrowed. 25 left to right. Out of 32 there are 25 ones और बाकी जो बचे हैं सब जीरो. So इस मास्क को हम बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो तरीका है इसे हम बोलते हैं CIDR notation. This is CIDR notation of representation of the mask. लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये है डॉटेड डेसिमल और ये है CIDR. CIDR का मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्योंकि अब सब क्लासलेस चल रहा है, मास्क कोई फिक्स तो है नहीं. क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग. So both mean the same thing. You can have it configured this way also or this way also. System को समझेगा. Okay, follow the rule. One more bit, left to right. If I pick up, now this bit is having the weightage of 64. So mask value आपका बन जाता है, पहले 3 octet का constant है 255, 255, 255. Your last octet has become 11000, meaning plus 64 means 192. And the meaning of this mask, system को क्या समझेगा? System understands कि given address में 24 network bit है, that is default. 2 bit borrow कर लिए, there are some bits. Remaining zeros left are 6 host bits. Can also be written as /26. There are 26 ones in the mask now, left to right. Okay, follow the rule. One more bit on this bit. Weightage is 32. So mask value आपका बन जाता है 255, 255, 255, 224. Right, 3 ones mean 224. Meaning 24 network bits as it is. 3 bit borrow किए हैं, subnet bits. Remaining zeros 5. /27. One more bit, meaning plus 16. Plus 16, mask becomes a 240, meaning 24, 4, 4, /28. One more bit, plus 8. Plus 8, meaning 248, meaning 24, 5, 3, /29. Follow the rule. One more bit, meaning plus 4. Plus 4, meaning 252. That is 24, 6, 2. That's 30. One more bit off, meaning plus 2. So mass becomes 254. That is 24, 7, 1 /31. And if I take all plus 1, so it's all 255, 255, 255, 255, 24, 8, 0 /32. Yes. ये है possible mask values. That is, in class C, you cannot expect the mask other than what we have listed. एक बिट ऑन करके हमने देख लिया कि क्या मास्क वैल्यूज हो सकती हैं. जो भी हमने लिस्टिंग में लिखा है, इसके अलावा दूसरा मास्क कुछ नहीं हो सकता. लेकिन
ये सभी मास्क वैल्यूज वैलिड नहीं है। उसका भी रूल है। रूल सेज दैट ए वैलिड सबनेट मास्क, क्या होगा? A valid subnet mask is one which provides you minimum 2 host pairs. मास्क जो है कम से कम 2 होस्ट पेट्स देना चाहिए या उससे ज्यादा, लेकिन कम नहीं। अगर 2 होस्ट पेट से वो कम देता है देन इट इज नॉट वैलिड, राइट? तो वैलिड सबनेट मास्क वो मास्क है जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होस्ट पेट्स आपको ऑफर कर रहा है। अगर 2 से कम है तो वो वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या लगता है इनवैलिड मास्क वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? द सेकंड लास्ट इज नॉट वैलिड because it gives you only one, 7th and 8th. एक ही होल बिट दे रहा है और हमें चाहिए कम से कम 2। उसी तरीके से लास्ट मास्क वैल्यू इज नॉट वैलिड बिकॉज 0 होल बिट्स आते हैं। वी नीड 2, कम से कम 2 होनी चाहिए। इन 2 के अलावा बाकी जितनी भी मास्क वैल्यूज हैं वो सब वैलिड है। दिस इज वैलिड 2 होल बिट्स, दिस इज वैलिड 3 होल बिट्स, so all mask values are valid. Yes. तो क्लास सी में जब भी सबनेटिंग होगा बस इसी लिस्टिंग में ही होगा, /25 से लेकर /30। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में? Yes, sir. Okay. Now, based on this understanding, we'll see an example of subnetting. और क्लास सी पे अपन पहले बात करते हैं। So, let us consider one class C network. ये आपका क्लास सी नेटवर्क है। अब हर नेटवर्क का एक नेटवर्क एड्रेस होता है, राइट? हम नेटवर्क डिवाइड कर रहे हैं तो नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस है। चलो एक नेटवर्क एड्रेस ले लेते हैं 210.1.0, राइट? ये एक क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है। क्यों है? बिकॉज फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू इज फ्रॉम क्लास सी एड्रेस रेंज एंड ऑल होस्ट बिट्स आर 0, राइट? होस्ट बिट्स सारे 0 हैं इसलिए ये क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है। अब इस वैल्यू के साथ जब तक हम डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हैं, क्या है डिफॉल्ट मास्क? As long as you are using the default subnet mask with its address value, that is 255, 255, 255.0. Yeah, default mask. It means what? No subnetting. This network is classful, undivided. अब ये जो mask लिखा है default in CIDR, we can also write it like this /24, right? The 24 ones default. लेकिन जैसे ही अगर हमने मास्क चेंज किया, suppose I change the mask from /24 and make it /26. अगर ऐसा हम करते हैं, now /26 means you are borrowing 2 bits +2, 2 बिट बोरो कर रहे हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। यानी इस ऑक्टेट को अगर मैं बाइनरी में लिखता हूँ so 8 zeros, ये लास्ट ऑक्टेट है, 2 बिट बोरो कर लिए ये। तो ये जो 2 बिट हमने बोरो किए ये क्या है? These are subnet bits, 2 subnet bits, right? जो डिफॉल्ट वंस है यहाँ पर 3 times 255 मीनिंग 24 नेटवर्क बिट्स, और जो जीरोस हैं मीनिंग 6 host bits. This is the meaning of this mask. /26 means 24 network bits, 2 subnet bits, 6 host bits. 1100 को अगर हम कन्वर्ट करें मतलब
192. Yes. So if you change a mass value to 192 like this, right? And this mass curve, write it again. 255, 255, 255. It remains same. But your last octet has become 192. This is changed subnet mask. ये मतलब हो गया. So these 3 times 255, 24 network bits. This is change mask. ये default mask नहीं है. ये केवल सबनेट मास्क है. और ऐसा मास्क अगर हम यूज करते हैं क्लास E के साथ, क्लास E एड्रेस वैल्यू, मतलब एक बात तो साफ है, वी आर डूइंग सबनेटिंग. ये मास्क जो है इस नेटवर्क को डिवाइड कर रहा है. कैसे डिवाइड कर रहा है वो हमें समझना है. How this mask is going to divide this network or what impact it's going to have over this classful network, that we need to understand. और वो हम समझेंगे by answering 5 questions. 5 सवालों के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मास्क है इस नेटवर्क को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है. और वो 5 सवाल कुछ अलग नहीं है. You already know it. The very first question here we would like to know is that when subnetting is being performed, so after all, how many subnets are getting created? Number of subnets. कितने subnets होंगे? ये मास्क जो है इस नेटवर्क को कितने सबनेट्स में डिवाइड करेगा? My first question. Right. Next, we would like to know that in every subnet, what number of hosts or addresses are going to be there? Number of hosts per network or per subnet. Here we have the subnet. Subnet is nothing, it's a network only, it's a small network. So per subnet hosts कितने होंगे? And my next question would be, what is going to be the range, IP address range? In every subnet जो भी host होंगे तो उनका range क्या होगा? Clear हो ना? पहला IP, दूसरा IP, last IP address range. One more thing we have to understand. जो भी सबनेट्स होंगे ये सबनेट एड्रेस वैल्यूज होंगी. जैसे नेटवर्क का होता है नेटवर्क एड्रेस, वैसे सबनेट का होगा सबनेट एड्रेस. So what are going to be subnet address values? Right? और जैसा आपको पता है कि हर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होता है, तो सबनेट का भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा. Yes, sir. So what is going to be the broadcast address per subnet? Right? So आप देखेंगे ये सवाल कोई अलग सवाल नहीं है, ये वही है what we did for earlier. But earlier we did for classful networks, and this time we're doing it on for subnets, and everything is based on bits availability. अब कितने बिट्स क्या किधर है, मास्क ये सब बता रहे हैं. So right now this mask tells that it is given address value there are 24 network bits, 2 subnet bits and 6 host bits. ऐसा मास्क बता रहे हैं और सारी कैलकुलेशन इसी पर है. चलिए let us start. My first question is number of subnets. अगर सबनेट देखना है तो हमें देखना पड़ेगा सबनेट बिट्स कितने हैं. सबनेट बिट्स आर 2. मास्क बता रहा है. So you have to make combinations of these 2 subnet bits. So this is about 2. That comes to 4. 4 subnets. यानी ये जो मास्क है इस नेटवर्क को 4 भागों में डिवाइड कर रहा है. 4 subnets. Somewhat like this. Next, in every subnet, host कितने होंगे? One and we have to see host bits कितने? Host bits are 6. So you have to make combinations of these 6 host bits. Combination will be 2 raised to the power 6. But here we do -2. हम हमेशा -2 करते हैं. क्यों? क्यों करते हैं? Network bit or broadcast address.
नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये दो वैल्यूज जो है रिजर्व हैं पर नेटवर्क. So we always do -2, and so this calculation is 2 raised to 6 होता है आपका 64 -2, that is 62. So 62 hosts or 62 addresses will be there per subnet. In every subnet, it's equally divided. Every subnet will have 62 IP addresses assignable. Right. So the question number 2 is answered. Next, 3 करने से पहले 4 करेंगे. ये वाला सबनेट एड्रेस वैल्यूज क्या होंगे. जैसे नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस वैसे सबनेट का सबनेट एड्रेस, मीनिंग टेक्निकली ऑल होस्ट बिट 0. अब सबनेट एड्रेस वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए we are going to use the formula, or formula है that we are going to subtract this mask value. Mask value is 192. Subtract this mask value from standard value. यानी फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, standard value minus mask value gives you subnet address value. And standard value is always 256. हमेशा 256 ही होगा. 256 are the possible values in an octet. So 256 minus mask value. Currently the mask value is 192. So your subnet address value becomes 64. This value is 64. Of course, this is subnet address value. And this is also known as base value. जो पहला कैलकुलेशन है आपका वो सबनेट एड्रेस वैल्यू तो होता ही है, उसे बेस वैल्यू भी बोलते हैं. And this base value in fact we are using to calculate subsequent subnet address values. यानी आगे की जितनी भी सबनेट एड्रेस वैल्यूज हैं in fact they are all based on this base value. That is next time जो आपका फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा कैसे, सबनेट एड्रेस plus this base value gives you next subnet address. तो सबनेट एड्रेस क्या है भी आपका 64 plus base value is again same 64. So next subnet हो जाता है आपका 128. Keep on adding this base value. Next time subnet address है आपका 128 plus base value 64. The next subnet 192. You are going to stop here now. क्यों? Because this value 192 equals to your mask value. Mask value अभी 192. So कहने का मतलब क्या है? You have to keep on adding this base value every time to this subnet address value till you get the value equaling to your mask, and that is going to be your last subnet address. तो याद रखिए लास्ट सबनेट एड्रेस हमेशा मास्क वैल्यू के इक्वल होता है और पहला सबनेट एड्रेस हमेशा नेटवर्क एड्रेस वैल्यू के इक्वल होता है, which is 0 here right now. So 0, मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ, 0 is going to be your first subnet address. 64, this is your second subnet address. 128 is the third subnet address and 192 is the last, that is the fourth subnet address. और ये जो भी कैलकुलेशंस आई हैं 0, 64, right, 128, 192, ये सब लास्ट ऑक्टेट के लिए हैं. All these calculations are for the last octet. क्यों? क्योंकि सबनेट बिट जो है हमारे ये दो सबनेट बिट ये लास्ट ऑक्टेट में ही तो है. तो जो भी कैलकुलेशंस आई हैं ये सब लास्ट ऑक्टेट के लिए हैं. तो कंप्लीट सबनेट एड्रेस वैल्यू जब लिखी जाएगी तो कैसा लिखेंगे? Remember, the first 3 octets are going to remain same. Yeah. Don't make any changes there.
यहाँ अगर आपने कुछ भी चेंज कर दिया तो नेटवर्क बदल जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क पार्ट है n. Right? If you make any changes here, it means you're changing the network. And here we are not changing the network, rather we're dividing the network. So my first three octets are all going to remain same. जो भी values calculations आई हैं, they are all for the last octet. So when you write the complete sum address value, the पहला sum address will look like this: 201. That's constant network part. My first sum address, this 0, last octet. This is the first sum address. My second sum address will be 201, last octet. This is 64. Next subnet will be 201, this 128. And finally, last subnet is 201, this 192. These are 4 subnet values. Question number, this is answered. You can cross verify 4 subnets. This network is getting divided into 4 subnets. ये एक सबनेट है, 4 सबनेट है, और ये है 4 सबनेट values. Now rest of the details are easy. हमें हर सबनेट पर देखना है IP address range क्या होगा और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा. IP address range का मतलब you will see what is the first IP, second, third, fourth, up to last. First IP to last IP. That means the range. And also the broadcast address. So first IP, you know, is always one more than the network address. What is one more? Just a minute. So one more than the network address. What is that? This is 210.1.1. This is the first IP address of this subnet. Next, now it all goes in sequence. Now will be 102, 103, 4. Again, last IP आने से पहले calculate the broadcast. Calculate the broadcast. और आपको पता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बाद अगला नेटवर्क शुरू हो जाता है, और यहाँ हमें अगला नेटवर्क मालूम है. अगला नेटवर्क है आपका 64. तो अगले नेटवर्क से एक कम पहले वाले सबनेट का ब्रॉडकास्ट होगा. ऐसे हो गया ना. So in this case, one less than 1.64 will be the broadcast of this previous subnet. One less will be 1.63. This is 200 and 1.63, and one less than the broadcast. That is the last IP. Last IP broadcast address एक कम होता है, यानी 210 or 1.62 is the last IP, and this is going to be your range, IP address range for the first subnet, counting from 1.1 up to 1.62. ये है range. कितने हो गई? कितने addresses हैं? How many addresses are these? 1.1 to 1.62. कितने addresses हैं? 62. 62, right? You can cross verify. 62 first per subnet, right? We've already calculated. Question number 2. Yes. So every subnet is equally divided in as what 62 IP addresses. Okay. Similarly, second subnet. First IP is 1 more. 65. Last IP से पहले broadcast calculate करो. 1 less. यानी 1.127.
So last IP 126. These are 62 IP addresses. Right. आनंद कॉल करता हूँ लेक्चर में कॉल करता हूँ. Similarly for the third subnet, first IP 1.9, broadcast 1 less, any 1.191. So last IP 190. These are 62 IP addresses. Last subnet, पहला IP 193. अब क्योंकि last subnet है तो broadcast हो जाएगा 255. So last IP is 254. These are 62 addresses. All are equally divided. All the subnets have got 62 assignable IP address values. लेकिन याद रखिए कि जितनी भी एड्रेस वैल्यूज हैं मास्क लिखना जरूरी है. /26 ये अगर नहीं लिखा तो कोई मतलब ही नहीं कि मास्क ये बता रहा है कि 2 बिट ले लिए हैं फ्रॉम द होस्ट पार्ट और डूइंग सबनेटिंग, और 2 बिट लेने से ये सब कुछ हो गया है. ऑल 5% आंसर. Yes. With this mask value now, 26, you can only use these values 1.0, 1.64, 128. You can only use them. Right? System will done it error. So these subnet address values. Similarly, with this mask value, you can only use these values 1.63, 127, 191, 255. These are broadcast. Right? So per subnet, you do value reserve. That's why we are doing -2. ये -2 यहाँ पे दिया है हमने. ये है network address and broadcast address. Otherwise, one subnet in itself is a block of all in all 64 addresses. 64 addresses का block है और ये 64 ही base value है आपका, right? Plus 64 equally divided it. So one subnet is a block of 64 addresses. That's why we are adding 64 plus 64 every time to get the next subnet value. Yes. तो आप देखेंगे इसमें मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है. Right on the day one जो कुछ बात चल रही थी वही बातें आज भी. But this time only one change is there. क्या है? Bits are shuffled. Shuffling हो गया bits का. Right? And with this, every calculation, एक bit भी इधर उधर हुआ, सारी calculation बदल जाएगी. बताइए, your questions now. सर तो हम तो कहते हैं CIDR नोटेशन. ये है serial notation. तो मतलब उस नोटेशन में जितने सारे एड्रेसेस आ रहे हैं उसको CIDR ब्लॉक करेंगे. हाँ, 26 का मतलब this is a block of 64 addresses now. सीधा बात ये होगी. ये तो मैंने बोला ना, एक सबनेट अपने आप में 64 एड्रेस का ब्लॉक है. Yes. Right? When you write 24 means this network is a block of 256 addresses. Select 24 का मतलब 8 होस्ट बिट है. 2⁸8 यानी 256. तो अपने आप में क्लास C का नेटवर्क 256 एड्रेसेस का ब्लॉक है. हाँ, कितने यूजेबल एड्रेसेस है वो एक अलग कहानी, लेकिन ब्लॉक साइज जो है वो 256 का है. उसके 4 भाग कर दिए. 256 को वैसे भी 4 से डिवाइड कर दो तो 64 ही आएगा. If you add all these 64 plus 64, right, 4 times, so you will get 256. कैसे भी ले लो, वहां पर आके कैसे भी ले लो, बात एक ही है. ओके. Yes. तो चलिए आप इसको जरा प्रैक्टिस करना. राइट. और कमिंग बैक टू द लेक्चर जो मैंने बताया था, आप उस पर आप गौर करो. सबनेटिंग जो बताई थी कल, जो मैंने बताया था कल या परसों, क्लाउड का, राइट, VPC एंड सबनेट. ठीक है, परसों शायद बताया था. Yes, sir. गो थ्रू दैट अगेन. ठीक है, वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया हूँ. ठीक, आज भी टाइम बिजी है. शाम को अगर हो पाए तो हो पाया. आई विल ट्राई, गारंटी नहीं है. चलिए रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम. Thank you, sir. Thank you, sir.